Hi guys, welcome to the session. In this session, we are effectively solving questions from number theory. एक रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स उठाया है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड विच बुक दिस इज द बुक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय Trishna publication. If you guys are following me in this channel, you know how much I profess my love for this book. It's actually the, let's say, repository of the time का material from 2016-17 period. It's a very good book. Flipkart पे available है. This is the ebook version of that book. 400-500 रुपए में मिल जाता है फ्लिपकार्ट में. आप चाहो तो जो हार्ड कॉपी है वो भी परचेज कर सकते हो. इट्स क्वाइट बजट फ्रेंडली. Let's look into this question. So this is the first question. We are typically going to be revise some questions of unit digit, remainder theorem, and that's all, right? Question says, find the last digit of this expression 2 raised to the power 412 into 4 raised to the power 428. So not talking too much about the theory. Let's directly solve it. सबसे पहले cycle of 2. So we know the cycles of 2 are 2, 4, 8 and 6. And you can see the solution is right in front of you. If this solution makes sense to you, जो किताब में दिया हुआ है, अगर if that makes sense to you, great. मेरा solution भी देख लो, ठीक है. तो cycles जो है 2 के, this 4 का जो cycle है बहुत ही simple है. 4 raised to the 1 is 4, 4 square करोगे तो that is 16. Right. So cyclicity for the last digit. Again, if I'm looking at the last digit 4 to the cube and multiplying one more 4, so it will be 4 6 4 6 4 6. तो यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा. ठीक है. तो what can I say about this 412? So 2 raised to the power, is it 4k plus something or 4k plus 1? तो देख लेते हैं 412 को डिवाइड करके. 4 10 40, 1 2, ठीक है. 3 12. So this is actually 2 raised to the power 4k into 4 raised to the power. Now 4 का साइकिल चूंकि 2 होता है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 428, and as you can see it will go because it is of course a even number, so it will go by 2. So 2 20s are, you can say, or 21s are 42. This will go, and 8 4 is a 8. ठीक है. So 214 times also this goes, so that means 4 raised to the power 2k. What does that mean? कि जो मेरा the last digit of this expression 2 to the power 4k would be, you have to be quicker than me, it will be 6 into the last digit of this would be 2k, which is 6. So that is 6 into 6 36. So last digit or unit digit will be 6 itself. ठीक है. अगर आप चाहो तो यहाँ पे आंसर मिला सकते हो. They have the answer 6 also given over there. जो वाला मेथड, आई थिंक वही मेथड उन्होंने भी यूज किया है. Nothing problematic. Let's look into the next question, shall we? In this question, again, I hope now you can see it. In this question, it is asking you to calculate the remainder for the division 5 raised to the power 64, 5 raised to the power 64 by 6, and you need to give me the remainder. Now, how do we do this? Effectively, मैं Euler use करूंगा. ठीक है. If you can see 5 and 6 are co-prime, so I can use Euler theorem, Fermat's theorem, whatever you want to call it. ठीक है. But यही है कि मेरे को totient function या Euler number of 6 पता होना चाहिए. So that is 6 का 2 into 3 होता है. ठीक है. तो वो याद रखना कि 6 into 1 by into 2 by 3. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है तो फिर it is 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 3 and so on and so forth, right? Prime basis. So 2 and 2 cut, this is 2. So the Euler number of this is 2. Now if you realize the 5 के power 2 raised to the power 32 में we can break it. Remainder of this thing is going to be 1 from the application of Euler theorem. ठीक है. Euler theorem के application से इसका remainder जो है वो 1 आ जाएगा. Here you can see the answer to that is also 1. You can read this. इन्होंने कुछ cyclicity वाला फंडा यूज किया है, cycle से कैलकुलेट करने की कोशिश किया. That also you can do. There's nothing wrong with it. But I have used the remainder theorem method. ठीक है. Let's go to the next one. Again, an interesting question, similar question. 2 raised to the power 34 by 5. Let's do this. Okay. 2 raised to the power
34 by 5. Again, we are using Euler for this. If you realize 2 and 5 co-prime है, अगर co-prime नहीं होता तो we would have taken out the common factor. But 2 and 5 co-prime है, so what we can do is we can possibly think of the totient function of 5. Totient of 5 is very simple. It's 4. It's a prime number. So if I can raise this to the power of 4, it can really help me. Let's see if I can. 32 does not break easily, so we'll have to make some adjustments. So this will be 2 raised to the power 4, and 4 8s are 32, and then 2 square divided by 5. Remainder we need to calculate, but if you can pay attention, this part will give me a remainder of 1. I just need to worry about the other part, that is 4 by 5. I need to find the remainder. 4 being less than the divisor, remainder will be 4 itself. So इसका remainder will be 4. ठीक है? So if you can see, they have also given you an answer that is 4 over there. And if you are interested, you can read the solution to understand this thing. They have given a rather different way rather. ठीक है? Next question. Find the remainder when 2 raised to the power 36 is divided by 31. Now पहली चीज जो आपको समझ में आना चाहिए वो ये है कि 31 is a prime number or not. 2 and 31 अगर prime है तो co-prime हो जाएगा, prime नहीं है तो फिर problem है. Obviously 31 is a prime number. ठीक है, 30 is a composite, 32 is a composite, 31 is a prime. So 31 अगर prime है तो फिर quotient of 31 is 30 itself. So what I can do is, देखो 2 raised to the power 30 dot 2 raised to the power 6 upon 31. ठीक है, 2 raised to the power 6 क्या होता है? 2 raised to the power 5 होता है 32. So this is actually 64. ये भी किया जा सकता है. So we need to find the remainder of this thing. Or now you know that this part, the remainder is going to be 1. I'm only going to be focusing on 2 raised to the 6 by 31. 2 raised to 6 by 31. We need to find the remainder. So this is 64 by, either I can do it 64 or एक और भी तरीका हो सकता है. I can break it like this. 32.2 by 31. ठीक है, अब अलग अलग आप कर सकते हो. 1 into 2, इसका रिमाइंडर जो निकलेगा इस पार्ट का सॉरी फॉर दिस, इस पार्ट का रिमाइंडर जो निकलेगा that will be 1 into 2. So फाइनल रिमाइंडर जो होगा that will be 2. ठीक है, let's check. Hold on. Yeah, so as you can see 99 के बाद ये है आंसर. तो ये है, आप देख सकते हो. अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो. दिस इज सम मेथड थ्रू विच दे हैव कैलकुलेटेड इट. चलिए एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं. ये क्वेश्चन इंश्योर करेगा कि हम समझ गए हैं ऑयलर थ्योरम को. 2 raised to the power 58 डिवाइडेड बाय 24. ना अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों कोप्राइम नहीं है. So obviously we need to take out some commonality in them. So this is, if you remember, this is 2 raised to 58. पहले दोनों नंबर को लिख लो, ठीक है, आपके ease of use के लिए. तो 2 raised to the power 58 and 24 is what? 8 into 3. So 2 raised to 3 into 3, 8 3 is 24. ठीक है, एक काम करो, 2 क्यूब निकाल लो इस पूरे एक्सप्रेशन से. अगर आप 2 क्यूब निकाल लोगे और फिर बाद में मल्टीप्लाई करना. So 2 cube मैं निकाल रहा हूं. So this will be 2 raised to the power 55. ठीक है, by this is 3 itself now. और 3 का जो ऑयलर होता है, rather ऑयलर नंबर होता है या टोशन फंक्शन, जो भी आप बोलना चाहो. एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस क्रिएट करा जाए. या आपको पता है 3 का जो टोशन फंक्शन है या ऑयलर नंबर है वो 2 होगा. Now let's do it. So this is 2 cube into 2 raised to the power 2. 25 से 50 चला जाएगा और hold on, 50 ही क्यों, 54 क्यों नहीं. So 27 से चला जाएगा and 2 बाहर रहेगा. ठीक है, so we have this thing. Now this part is by the application of Euler theorem, remainder 1, और this is 2. 8 2 is 16. ठीक है, आप remember this is
2 cube already there and 2. So 2 cube into 2, that is 16. This is the answer. Let's check this once. ठीक है, yeah, they have also given you that answer. यहाँ चेकआउट कर सकते हो 16 एज द आंसर. ये वाला मेथड समझ में आ रहा है अगर तो ये वाला देख लो, मेरा वाला मेथड अगर समझ में आ रहा है तो मेरा वाला देख लो. ठीक है, तो विल कीप इट एट दैट. लास्ट डिजिट हमने कैलकुलेट कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम हमने कैलकुलेट कर लिया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू लास्ट 2 डिजिट एंड सम अदर क्वेश्चन टाइप्स इन द सिमिलर फैशन. अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है, कंसिडर ज्वाइनिंग ट्राइडेंट क्लासेस फॉर योर कैट प्रिपरेशन. बहुत ही आराम से और बेहतरीन तरीके से हम और ज्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को समझेंगे. थैंक यू. दिस इज सोमजीत गोस्वामी साइनिंग आउट.